Hello बच्चों, let us have a look at this question which says which of the following is not used for testing proteins. Okay, जब कभी टेस्टिंग या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात होती है तो उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं. So the key concept of this question is qualitative analysis. अब ये जो हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस को हम एक एक करके देख लेते हैं सारी टेस्ट को. ओके, सो फर्स्ट इज मोलिश टेस्ट. मोलिश टेस्ट किस लिए? फॉर टेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स. Reagent used is, कैसे टेस्ट करते हैं? With the help of this reagent which is solution of alpha naphthol in ethanol. Now this reaction takes place in acidic medium, that is in the presence of H plus ions, which generally comes from conc sulfuric acid or concentrated sulfuric acid यूज होता है. ठीक है, तो जब हम इस रिएजेंट को एनालाइट में डालते हैं या कंपाउंड में तो एक फॉर्मेशन होता है पर्पल रिंग का. which indicates positive test. Okay. अब हम सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं. Second option is Biuret test. ये टेस्ट किस लिए होता है? This test is used for testing the presence of peptide bonds. ठीक है, ये टेस्ट स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में डिटेक्ट करता है. Reagents used are hydrated copper sulfate CuSO4, potassium sodium tartrate, now this reaction takes place in basic medium. So KOH and NaOH, that is potassium hydroxide and sodium hydroxide, are added to make the solution alkaline. Okay. Potassium tartrate is added to chelate the copper ions. चिलेशन होता है जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं. ओके, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं इसकी. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपाउंड विद पेप्टाइड बॉन्ड CH with R alkyl group, CO NH.
Okay, so CONH is the peptide bond, plus Cu2 ion. Okay, it is hydrated कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें कॉपर 2+ आयंस होते हैं, जिसका ब्लू कलर होता है. ओके, in the presence of basic medium it gives violet color complex. Formation of this violet color complex indicates positive test. Now this violet color complex is because of a peptide copper complex. अब हम थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन दैट इज निनहाइड्रिन टेस्ट. अब ये टेस्ट किस लिए होता है? इट इज अ टेस्ट फॉर अमीन्स और अमीनो एसिड. राइट, इसमें निनहाइड्रिन कंपाउंड इज यूज्ड. निनहाइड्रिन with the formula C9H6O4. ये निनहाइड्रिन कंपाउंड है जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम एनालाइट में ऐड करते हैं एंड वी टेस्ट दैट एनालाइट. रिएक्शन देख लेते हैं हम. निनहाइड्रिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निनहाइड्रिन. One 6-membered and one 5-membered ring, carbonyl with 2 OH. This is the structure of ninhydrin. Okay. Now ninhydrin is added in analyte. Let's take an example of amino acid NH2CH with an alkyl group. In the presence of OH ions, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. निनहाइड्रिन का डाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ये जिसका स्ट्रक्चर है. N and again this 5-membered ring and then 6-membered ring. We'll add the double bonds in this ring. This is a deep blue complex which indicates positive ninhydrin test, along with an aldehyde RCOH, which is an aldehyde, plus CO2 plus water molecules. Okay. This is a positive ninhydrin test reaction.
Now let us look at the last example, that is Millon's test. Millon's test is also used for detection of amino acid tyrosine. It is a specific test for tyrosine. For specific होता है सारे अमीनो एसिड्स के लिए नहीं होता है, बट फॉर टायरोसिन also it detects phenolic group. Okay. रिएक्शन देखते हैं. Tyrosine in the presence of nitric acid and HgNO3 and HgNO3 2, that is mercuric nitrate and mercurous nitrate. A brick red complex is formed, which indicates positive test. Okay, so now हमने सारी रिएक्शन को वन बाय वन देखा. तो बायूरेट टेस्ट जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स है, पेप्टाइड bond is present in proteins. Amino acid is also a part of protein. Millon's test, which is specific for tyrosine, it is also a amino acid that is present in protein. So all these tests can be used for testing for Molisch test, which is for carbohydrate. So the correct option is Molisch test. Molisch test is not used for testing proteins. I hope you understood this concept. Thank you.